Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Tutu Shagun Mittal are entering the meeting. How come? One must be Siddhi. Good morning, ma'am. Good morning. ये निश्चल क्यों आ रहे हैं भाई? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Nischal is in which class? Nischal? Good morning, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good Good afternoon, Shivansh. How is Pratik feeling today? Pratik, are you feeling better? No, ma'am. What happened? Fever? Yes, ma'am. Oh. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Aradhya. Where were we yesterday? Reading part we were doing, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. Let everyone come in. I need to share the book, right? Ma'am. Good afternoon, Parush. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Saksham. How is everyone doing? Good? Yes, Yes, ma'am. Okay. How are you, ma'am? I am also good, beta. Fine. I think we finished with the cold Ma'am, we have finished the cold weather season. and hot weather season also, I think. Half was done, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. Fine. So we'll continue from the same part where we left it yesterday, right? Ma'am, full was done. Huh? Full was done. Summer season full was read. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, but you haven't explained it, ma'am, the season. बेटा आप हमें ये बताओ. हाँ, I was about to ask this only कि what exactly I need to explain, because whatever seasons we have, they are the climatic conditions which are prevailing at that particular time period in a particular area. Like here it is written, no, the influence of the shifting of the heat belt can be seen clearly from temperature recordings taken during March में. आप देखो मार्च के मंथ में, बिकॉज हमारा वो शिफ्ट धीरे धीरे हो रहा होता है ना हीट बेल्ट का. कैसे शिफ्ट हो रहा होता है भाई? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से जो सन का जो अर्थ की जो पोजीशन है, जो सदर्न हेमिस्फेयर, जो अभी अभी एट प्रेजेंट जो ये शिफ्ट धीरे धीरे होना 14 जनवरी के बाद जब हम मकर संक्रांति मनाते हैं तो हमारी जो अर्थ है उसकी पोजीशन चेंज हो रही होती है. ठीक है, ठीक है. अभी अभी एट प्रेजेंट कौन सा हेमिस्फेयर जो है वो सन को फेस कर रखा है, बताओ. मैम सदन. सदर्न हेमिस्फेयर कर रहा है. तो अब जब आपका जब मकर संक्रांति होगी तो धीरे धीरे अर्थ की जो टिल्टिंग है वो चेंज हो रही है. ठीक है,
तो अर्थ की पोजीशन चेंज हो रही है, अर्थ की पोजीशन चेंज होने की वजह से मार्च टू मई में आप टेम्परेचर वेरिएशंस देख सकते हो, है ना। मार्च Yes, में ma'am. टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता है, अप्रैल में भी इतना नहीं होता है जितना कि मई में ऑल ऑफ अ सडन जो है वो आपका हाई पहुंच जाता है 45 डिग्रीज तक, है ना। Yes, ma'am. एंड पौरुष, हाँ एंड पौरुष वन मोर थिंग, आप ये देखो बिकॉज अलग अलग एरियाज का जो है हम डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल भी तो देखते हैं ना, तो उन सबको देखते हुए वो सारे कंडीशंस को दिमाग में रखते हुए वी टेल अबाउट द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। जैसे अभी आप देखो इस समय Okay. जनरली जनवरी में इतना ठंडा नहीं होता है, बट फॉर लास्ट पास्ट आई थिंक 4-5 years हमारी जो सर्दी शुरू होती है, एक्सट्रीम वाली ठंडी वाली जो कोल्ड वेव्स का जो इफेक्ट होता है वो इसी मंथ में शुरू हो जाता है, जनवरी में शुरू होता है, क्योंकि स्नोफॉल लेट होती है। स्नोफॉल का इम्पैक्ट जो है हमारे प्लेन्स की तरफ आता है फ्रॉम द हिल्स, राइट। Yes, ma'am. तो वो हम एक्सपीरियंस इजीली कर सकते हैं, है ना। अब देखो जैसे कल से जो है टेम्परेचर में काफी जो है डाउनफॉल आया है। आफ्टर इवनिंग में ठीक था, आफ्टरनून में भी इट वाज ओके, रात में ऑल ऑफ अ सडन इट वेंट डाउन टू 10 डिग्रीज to 9 डिग्रीज, तो ये थोड़ा ठंडा हो जाता है। मॉर्निंग ऑल्सो व्हेन यू गॉट अप इट वाज समवेयर अराउंड 11-10 ओनली, राइट। Yes, ma'am. तो ये टेम्परेचर वेरिएशन जो उस समय किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं ना, उनके उन कंडीशंस को देखते हुए वी एनालाइज, राइट। एनीथिंग दैट वी हैव रेड टिल नाउ, especially the seasons that we have read, winter and the summer season, anything that is not clear you can any one of you whichever line is not clear or understood you can ask. If no doubts then we can proceed on, right. No doubts, ma'am. Okay, fine. So shall we carry on? Ma'am, Yes, ma'am, beta. Yes, yes. ma'am, what is the meaning of torrential downpours? टॉरियंशियल डाउनफोर्स कल हमने बताया तो था शायद, No, ma'am. बेटा टॉरिड जोन कौन सी वाली होती है? Ma'am, the center one in which ma'am equator lies. है ना, तो उसको हम वो हमारी कौन सी जोन होती है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Torrid zone. टॉरिड जोन होती है, तो टॉरिड जोन जो होती है, टॉरेंशियल रेन बेसिकली ये होती है कि व्हेन समथिंग गोज कॉन्टिन्यूसली, है ना, व्हेन कॉन्टिन्यूसली इट इज रेनिंग, pouring of water, it is called as torrential rain. Okay, जैसे okay, ma'am. आपने एक्सपीरियंस करा होगा, देखो बेटा आपने कई बार एक्सपीरियंस करा होगा कि एक मोमेंट्री जो है पानी गिरना शुरू होता है, इतना जबरदस्त डाउनपोर होता है कि विद इन 3 to 4 seconds आप जो है अच्छे से ड्रेंच हो जाते हो पानी में। कभी ऐसा एक्सपीरियंस करा है आपने कि ऑल ऑफ अ सडन Yes, मोटी ma'am. मोटी मोटी बूंदें गिरती हैं और आप Yes, पूरे भीग जाते हो, yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना। एंड इट Ma'am, इज full speed. बस इसी को हम टोरेंशियल रेन बोलते हैं बेटा, ठीक है, राइट। Okay, ma'am. हाँ, And ma'am, one more thing. Ma'am, when a ITCZ moves over an area, so ma'am, that area directly gets to the exposure of the sunlight, ma'am. दोबारा दोबारा बोलो बेटा। Ma'am, can I speak in Hindi? ओके, यस यस। Yes, ma'am. मैम जैसे कि ITCZ होता है मैम, उस पे सन की डायरेक्ट लाइट का एक्सपोजर होता है। तो मैम जैसे ITCZ मूव करता है नॉर्थ की तरफ, हमारे एरिया पे आता है, तो मैम जो सन की जो डायरेक्ट सनलाइट होती है वो हम पे भी पड़ती है। नहीं नहीं, देखो ITCZ आप गलत समझ रहे हो। ये जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है, इट इज दैट जोन जहां पे हमें ऐसा लगता है, जब देखो हवा जब जो एयर एयर ब्लो करती है, जब उसकी एयर की जो मूवमेंट होती है वो जब सदर्न हेमिस्फेयर से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे जाती है, तो इट इज कॉल्ड एज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। देखो एज पर द डेफिनेशन दैट इज गिवन इन द बुक, है ना। लेट मी ओपन दैट, है ना। कह रहा है द ITCZ इज अ ब्रॉड ट्रो ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स, दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। इसको हम आपको डायग्राम के तौर पे दिखाते हैं, एक मिनट।
देखो ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, ठीक है। ये आपकी अर्थ हो गई, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ये आपका सदर्न हेमिस्फेयर, राइट। अब वो ये कह रहा है when the winds blowing from the southern hemisphere, when they enter the northern hemisphere, because of the rotation of the earth, when the hemisphere changes, it feels that the winds, ये कौन कर रहा है? निश्चल। बेटा okay, wait a second children, wait a second. चलिए, I'll do it again. Parush, are you there? Yes, ma'am. Okay. ये I am not able to handle it with this thing, तो वो थोड़ा सा सर्कल गड़बड़ बन रहा है ना. No problem, ma'am. I will understand. Bear with it, हाँ. रुको, इसको दोबारा देखते हैं. ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये हमारा सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है. अब ये जो नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर्स हैं, यहाँ से जब विंड्स ब्लो करती हैं, इज अन्वेषा देयर इन द क्लास? Please check in the participants list. Is Anvesha there? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Actually, I have removed 2 people who were creating nuisance. Is this Anvesha the genuine? Let me check beta. एक minute बच्चा. I'll just check. Okay, when these winds, when they move towards the northern hemisphere, they tend to change their directions. Why do they tend to change their direction? It is because of the rotation of the earth, right, Parush? Yes, ma'am. So that is why it is called as intertropical convergence zone, right? Okay, ma'am. So, ma'am, it means the direction of the sunlight doesn't change, ma'am. The direction of the winds change, ma'am. Actually. It seems as if the direction of the wind has changed, though it does not change. But because of the rotation and the changes in the hemisphere, it says that it has, changed the direction. Okay, ma'am. Fine. Okay, I'm Yes, sharing ma'am. the screen again. Chaliye. It says the intertropical convergence zone is a broad trough of low pressure in equatorial latitudes. This is where the northeast and the southeast trade winds converge. This convergence zone lies more or less parallel to the equator but moves north or south with the apparent movement of the sun. Clear? Yes, ma'am. Clear. Coming to the next one. Seasons read. Any other thing that is not clear or understood?
चलिए, we have read a striking feature of the hot weather season is the loo. Yes, ma'am. Okay, fine. We have read this. Let us have Utkarsh Gangwar reading Advancing Monsoon, the rainy season. Utkarsh, are you there? Ma'am, may I read? Ma'am, may I? Ma'am, may I? Let us have, okay, Ahana, padho beta. Read. Yes, ma'am. Advancing monsoon. By early June, the low pressure condition over the northern plains intensifies. It attracts the trade winds of the southern hemisphere. These southeast trade winds originate over the warm tropical areas of the southern oceans. They cross the equator and blow in a southwesterly direction, entering the Indian peninsula as the southwest monsoon. As these winds blow over warm oceans, they bring abundant moisture to the subcontinent. These winds are strong and blow at an average velocity of 30 km per hour. With the exception of the extreme northwest, the monsoon winds cover the country in about a month. The inflow of the southwest monsoon into India brings about a total change in the weather. Early in the season, the windward side of the Western Ghats receives very heavy rainfall, more than 250 centimeter. The Deccan Plateau and parts of Madhya Pradesh also receive some amount of rain in spite of lying in the rain shadow area. The maximum rainfall of this season is received in the northeastern part of the country. Mawsynram in the southern ranges of the Khasi Hills receives the highest average rainfall in the world. Rainfall in the Ganga Valley decreases from the east I think this to was the west. done, no? Yes, ma'am, we did 2 paragraphs Haan, yesterday. because I remember Aradhe read this. Okay, no, no problems. Yes, ma'am. Carry on, carry on. Carry on. Yes, ma'am. Rajasthan and parts of Gujarat get scanty rainfall. Another phenomena associated with the monsoon is its tendency to have breaks in rainfall. Thus, it has wet and dry spells. In other words, the monsoon rains take place only for a few days at a time. They are interspersed with rainless intervals. These breaks in monsoon are related to the movement of the monsoon trough. For various reasons, the trough and its axis keep on moving northward or southward, which determines the spatial distribution of rainfall. When the axis of the monsoon trough lies over the plains, rainfall is good in these parts. On the other hand, whenever the axis shifts closer to the Himalayas, there are longer dry spells in the plains and widespread rain occur in the mountainous catchment areas of the Himalayan rivers. These heavy rains bring in their wake devastating floods, causing damage to life and property in the plains. The frequency and intensity of tropical depressions too determine the amount and duration of monsoon rains. These depressions form at the head of the Bay of Bengal and cross over the mainland. The depressions follow the axis of the monsoon trough of low pressure. The monsoon is known for its uncertainties. The alternation of dry and wet spells vary in intensity, frequency, and duration. While it causes heavy floods in one part, it may be responsible for droughts in the other. It is often irregular in its arrival and Wait, its retreat. Ahana, wait. Yes, Taran? Taran, you can rejoin. I think you are not able to open your mic, right? Taran, you rejoin, beta. Chalo, carry on, Ahana.
Hence, it is sometimes disturbs the farming schedule of millions of farmers all over the country, retreating post monsoons. Wait. During October, Wait. Now, class, anything up till here to be explained again? No, ma'am. No, ma'am. Ma'am, Ma'am. ma'am, in this paragraph, हाँ, what is the meaning of trough and axis? What are they talking about, ma'am? Trough and axis? तो I can't जो understand. वो डिप्रेशन एरिया क्रिएट हो जाता है ना, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव हीट, है ना, Yes, ma'am. ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये एक्सेस जो है, रुको एक मिनट, जो ये जो एक्सेस है, दे आर टॉकिंग अबाउट द अर्थ का एक्सेस जो कि शिफ्ट हो जाता है ना। अभी जो हमने पढ़ा था कि भाई जो पोजीशन चेंज होती है हमारे अर्थ की, तो जब ये रेन मॉनसून सीजन होता है उस टाइम पे भी जो अर्थ की एक्सेस चेंज हो रही होती है ना भाई, 4 पोजीशन, Yes, ma'am. हमने 4 पोजीशंस पढ़ी हैं, इक्विनॉक्स वाला पढ़ा है और सोलिस्टिस पढ़ा है ना। Yes, ma'am. तो बस दे आर टॉकिंग अबाउट दैट ओनली, ठीक है। इसमें एक्सेस जो चेंज होता है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से अर्थ की पोजीशन चेंज होती है, तो उसका जो अर्थ की पोजीशन चेंज होने की वजह से जो भी सीजनल चेंजेस आते हैं उसके बारे में दे आर टॉकिंग अबाउट, राइट। And ma'am, what is the meaning of the word spatial? वेयर इट इज, SPATIAL, Yes, ma'am. Yes, ma'am. कहाँ पे है? They are talking about the distribution of the rainfall, no? Yes, ma'am. हाँ, भाई कितना रेनफॉल कहाँ पे मिलेगा, है ना, ये उसके बारे में दे आर टॉकिंग। Okay, ma'am. यस तरन, नाउ इज इट ओके? Yes, ma'am. Now I'm able to unmute. Actually, sometimes there are, glitches in it. That is why if you feel that you are facing this kind of problem, you can always rejoin, right? All right, ma'am. Ma'am, I have a doubt. Yes, beta, please ask. Ma'am, nowadays Rajasthan is facing very heavy rainfall and the temperature has also dropped to 8 degrees. And Yes. why such phenomena are taking place? बेटा, because of the disturbances which are created, Mediterranean Sea में हमने पढ़ा है ना, वेस्टर्न disturbances है ये जो चिलिंग सीजन जो अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चिल वेदर, ये बिकॉज ऑफ द मेडिटेरेनियन जो भी चीजें मेडिटेरेनियन सी पे डेवलप हो रही हैं, उसका इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट वी आर फेसिंग, है ना। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे जो है एक्सट्रीम कोल्ड वेदर जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम लोग। और मैम लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से बारिश तो नॉर्दर्न इंडिया में होती है और हाँ। राजस्थान कम्स इन द वेस्टर्न पार्ट। वो तो पर वो ये जो विंड्स ब्लो करती है ये आती पाकिस्तान की तरफ से ही है ना, ये उस तरफ वाले एरिया से ही आती है, राजस्थान को कवर करके आपका पाकिस्तान, राजस्थान, एंड देन इट कम्स टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इस वजह से आप देखो ना, राजस्थान तो पूरा का पूरा डेजर्ट रीजन है, तो डेजर्ट एरिया में वैसे भी भाई क्योंकि सर्दियां हैं, धूप निकल नहीं रही है, तो रेत और ज्यादा ठंडी हो गई, तो टेम्परेचर अपने आप जो है डाउन चला जाएगा वहां पे, तो है ना। चुरू वगैरह जो है राजस्थान के 0 डिग्री चला जाता है टेम्परेचर, क्योंकि डेजर्ट रीजन है और डेजर्ट में सैंड का सबसे ज्यादा जो है कवर होता है, और सैंड जो है सबसे की कैपेसिटी होती है ना जल्दी ठंडी और जल्दी गर्म होने की। अब जब धूप निकल नहीं रही है तो क्या होगा, सैंड ज्यादा ठंडी रहेगी, तो उस वजह से जो है टेम्परेचर और डाउन चला जाएगा। ऑल राइट मैम। हाँ जी पौरुष, आपका Ma'am, क्या? जी पौरुष। ma'am, what is the difference between wind and current? बेटा, विंड इज द एयर दैट ब्लोज एंड करंट्स यू सी इन द वाटर। भाई ओशन करंट्स होती हैं, Yes, ma'am. ओशन करंट्स दे जनरेट इन वाटर बॉडीज, और आपका एयर जो है इट ब्लोज। विंड जो होती है, विंड इज द एयर दैट ब्लोज। मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वेव्स? बेटा करंट्स जो होती है दे कीप ऑन मूविंग, वेव्स जो होती हैं वो पानी के अंदर उठने वाली जो है मोमेंट्री वो होती हैं, वेव जो मोमेंट्री जो है जंप होता है, ठीक है। जैसे टाइड्स होती हैं जो कि हाई टाइड्स होती हैं, ये ओरिजिनेट होती है बिकॉज ऑफ द फुल मून एंड द न्यू मून, ठीक है।
टाइड्स तो वैसे हमेशा रहती हैं, और वेव्स जब हल्की सी जब हवा का प्रेशर आता है ना, तो उसकी वजह से वेव्स क्रिएट होती हैं, कभी तेज कभी कम। और जो करंट्स होती हैं, करंट्स और वेव्स में डिफरेंस पता है ना आपको? Ma'am, Yes, ma'am. waves are external in the water and currents are internal. Internal. They're inside the water. Yes. And currents are generally categorized into two parts. एक आपका warm currents and one the cold currents. Warm currents are the currents that originate from equator to and move towards the polar areas, and the cold currents they originate from the polar areas and move towards the equator, right? Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes, beta. Ma'am, does trough here refers to ma'am ITCZ? No. Trough here refers to the low pressure area that is created. Okay, ma'am. So, ma'am, when on Himalayas, ma'am, low pressure areas created, ma'am. So from southern side, ma'am, the winds will come. So, ma'am, why the rain is not there on the plains, ma'am? Because when the winds they will reach to. I will tell you. It is because when the wind blows from a colder region, it does not carry moisturizer. See, when you are in AC, do you sweat? You don't sweat, right? No, ma'am. So when the winds blow from the Himalayan regions and they come towards the north, they do not get the moisture from there, and that is why in the plains they do not rain, right? So, ma'am, winds come from ma'am the Indian Ocean side or from another side? नहीं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में आपकी विंड्स जो है ऊपर की तरफ से आ रही होती है, मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करके, और आपका थोड़ा सा हिमालयास के पार्ट को क्रॉस करके। वैसे तो कंप्लीटली नहीं आ पाती हैं, क्योंकि चाइना से जो कोल्ड वेव्स ओरिजिनेट होती हैं बेटा, हिमालयास उनको स्टॉप कर देता है ना? मैम तिब्बतन प्लेट्यू भी करता है मैम। हाँ, और तिब्बतन प्लेट्यू जो है आपका गर्म होता है, इस वजह से भी जो है वहां पे जो है आपका हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, तो वहां से भी विंड्स नीचे की तरफ आती हैं। पर क्योंकि जब वो नीचे की तरफ आती हैं तो दे क्रॉस दी हिमालयाज। अब हिमालयाज जो है क्योंकि ठंडे हैं, है ना, स्नो कैप्ड एरियाज हैं, तो वहां से जब विंड कम्स डाउन, इट डज नॉट पोर रेन, क्योंकि वहां पे से बिल्कुल मॉइस्चर कलेक्ट नहीं करती है वो, ठीक है? ओके मैम। तो मतलब मैम कि हमारा जो लो प्रेशर एरिया है वो हिमालय के नॉर्दर्न साइड पे क्रिएट होता है। यस, ओके मैम, ओके। थैंक यू मैम। Anna, you want to ask something? Yes, ma'am. Ma'am, the western disturbances that occur in the Mediterranean Sea, what are their origination? Like how they occur in Because Mediterranean? बेटा वहां पे जो आपके कोल्ड ओशन करंट्स और जो वार्म ओशन करंट्स होते हैं ना, सेम वही सारा का सारा जो हाई प्रेशर लो प्रेशर एरियाज होते हैं ना, वो क्रिएट होते हैं। उसकी वजह से आफ्टर एवरी 3 to 4 years जो है इस तरीके के डिस्टर्बेंस रहते हैं। भाई पेरुवियन से जो है आपका वार्म करंट आती है, पर कई बार जो है कोल्ड करंट आती है, पर कई बार वार्म करंट इज वार्म करंट रिप्लेसेस दी कोल्ड करंट। तो जब इस तरीके की कंडीशन होती है तो उस टाइम पे हमारे जो मानसून आते हैं वो बहुत वीक होते हैं, हम लोग की तरफ जो मानसून आते हैं वो वीक हो जाते हैं, ठीक है? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द कंडीशंस दैट डेवलप ओवर डिफरेंट रीजन्स। वो आपका हमने कल पढ़ा था ना, एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन वाला जो था। Yes, ma'am. बस ये सारे Yes, ma'am. रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Okay, ma'am. And ma'am, what is the role of jet stream here in these? बेटा जेट स्ट्रीम्स जो होते हैं ये आपके कॉन्टिन्यूसली ब्लो करते हैं। दीज आर सरफेस विंड्स, है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दे आर कॉन्टिन्यूसली ब्लोइंग। इनकी स्पीड बहुत तेज होती है ना, तो इनका भी Yes, ma'am. इम्पैक्ट रहता है, इनका भी इम्पैक्ट जो है बहुत ज्यादा रहता है इन द मॉनसून्स, ठीक है? Okay, ma'am. फाइन। यस पौरुष। मैम जो तिब्बतन प्लेटियो होता है मैम, वहां पर तो लो प्रेशर बनता है मैम गर्मियों में। तो मैम जब मॉनसून विंड्स वहां से आती हैं तो मैम क्या वो भी मॉइस्चर वहां पर खो जाती है? सर्दियों में बेटा वहाँ हाई प्रेशर होता है ना, तो यस मैम। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वहाँ जो आपका मेडिटेरेनियन सी के एरिया के वहां पे जो भी एरिया क्रिएट होता है वो तिब्बतन प्लेट्यू की तरफ से होते हुए आता है ना, यस तो और हिमालयास को क्रॉस करता है। यस मैम। बस तो वहां से जो, क्योंकि वहां पे हाई प्रेशर एरिया है तो वहां से विंड्स जो है इधर की तरफ जो है बढ़ने लगती हैं, ठीक है? ओके, चलिए, shall we carry on?
Yes, Shailesh. Come on to the now this post retreating or the post monsoons, the transition season. See, we all know October to November is the transition period, right? yes, ma'am. During the month of October November आपने देखा होगा these monsoons they go very slow, they go very weak, क्योंकि it is the time when they retreat, they move back, they go back towards the oceans, right? So when they are going back, they hardly uh, pour anything, they hardly have water in them. That is why no rainfall takes place with the retreating monsoons. But when the Bay of Bengal branch that we have in the retreating monsoons, because of the depression that is created in the ocean, these retreating monsoons they pour rain in the southern part of the country. When they retreat in the month of October November, the southern part of the country, especially Tamil Nadu, it receives ample of rainfall during the winter season, right? And Yes, ma'am. and see this transition period, it is also telling you that how the climatic, how the weather changes in the month of October November, from September to from August to September, completely transition takes place. But in the month of October, the daytime is, the temperature is very high, in the mornings and evenings it is moderate. So sometimes people, they experience this October heat. What is this October heat? Daytime, because the temperature goes very high, so people mostly this fainting and all is quite common during the month of October, because of the extreme high temperature. The skies are very clear. You must have observed that during September October the skies are very very clear, no clouds are seen, blue sky, white clouds you can clearly see, no black clouds, right? So this is the time when the complete transition takes place, and all the monsoons, when monsoons they completely withdraw from the northern part of the country, northern plains, right? Yes, ma'am. Let us have Mihika reading. Okay, ma'am. Retreating post-monsoons, the transition season. During October-November, with the apparent movement of the sun towards the south, the monsoon trough or the low-pressure trough over the northern plains becomes weaker. This is gradually replaced by a high-pressure system. The southwest monsoon winds weaken and start withdrawing gradually. By the beginning of October, the monsoon withdraws from the northern plains. The months of October-November form a period of transition from hot rainy season to dry winter conditions. The retreat of the monsoon is marked by clear skies and rise in temperature. While day temperatures are high, nights are cool and pleasant. The Exactly. land is still moist, Hmm. You must have observed, owing you must have observed in the month of September, lot of moisture you can see on the plants, on the grass, right? And as the you know uh, days pass, when you are closer to October, when you are closer to November, you will find more of moisture on the land everywhere, right? Right? So this is how we come to know that the temperature is falling down and the season is changing now. From the rainy season, we are entering into the winters, right? yes, ma'am. Anji. Chalo Mika, carry on. Owing to the conditions of high temperature and humidity, the weather becomes rather oppressive during the day. This is commonly known as October heat. In the second half of October, the mercury begins to fall rapidly in northern India. The low pressure conditions over northwestern India get transferred to the Bay of Bengal by early November. This shift is associated with the occurrence of cyclonic depressions which originate over the Andaman Sea. These cyclones generally cross the eastern coast of India, cause heavy and widespread rain. These tropical cyclones are often very destructive. The thickly populated deltas of the Godavari, the Krishna, and the Kaveri are frequently struck by cyclones, which cause great damage to life and property. Sometimes these cyclones arrive at the coasts of
Odisha, West Bengal, and Bangladesh. The bulk of the rainfall of the Coromandel coast is direct from depressions and cyclones. Distribution of rainfall. Okay. Parts of Mika, western wait, coast wait. and north. Mika, wait. Up till here, anything that needs to be explained? Clear and understood, everyone? Okay, fine. Yes, ma'am. See, distribution of rainfall tells you that, you know, how there is variation in the distribution of rainfall. Not every place where monsoon comes gives equal distribution. Some parts of the country, they receive ample of rainfall, whereas some parts of the country, they are completely deprived of the rain. The higher altitude areas that we have there, you know, moderate, the rainfall hardly takes place over there because of the low temperature. The precipitation changes in the form of snowfall. So in the higher altitude areas, we have snowfall, but not very frequent, right? So the precipitation percentage is very, very low in the higher altitude areas. And in the plains part also, not every place receives equal amount of rainfall, right? Fine. So Anoki, can you read it quickly? Distribution of rainfall. Okay, fine. Mihika? Acha, Vyom Sharma. Vyom, are you there? Ma'am. Ma'am, Yes, ma'am. Porish. No, Vyom Sharma. Read. Yes, ma'am. Vyom, read. Yes, ma'am. Retreating post monsoons. Now, distribution During of rainfall. Distribution of rainfall. okay, ma'am. Distribution of rainfall. Parts of western coast and northeastern India receive over about 400 centimeter of rainfall annually. However, it is less than 60 centimeter in western Rajasthan and adjoining parts of Gujarat, Haryana, and Punjab. Rainfall is equally low in the inferior of the Deccan Plateau and east of the Sahyadris. Why do this region receive low rainfall? A third area of low precipitation is around Leh in Jammu and Kashmir. The rest of the country receives moderate rainfall. Snowfall is restricted to the Himalayan region. Owing to the nature of monsoons, the annual rainfall is highly variable from year to year. Variability is high in the regions of low rainfall, such as parts of Rajasthan, Gujarat, and leeward side of the Western Ghats. As such, while areas of high rainfall are liable to be affected by floods, areas of low rainfall are drought prone. Fine. Anything to be explained here in this? Now, No, monsoons. ma'am. Okay, Anuki, you are not able to unmute yourself. Okay. Even I also tried, but no, chalo, koi problem nahi. See, monsoons, they act as a unifying bond. If you see throughout the country, when the monsoons arrive, whole of the country, you know, waits for these monsoons, especially the farmers, those who are there. We all know that India is an agrarian economy. So almost all the people in every part of the country, they practice agriculture, right? So because of this, there are different festivals which are based on the harvesting and the sowing seasons, right? So that is why throughout the country, though time periods may be little different, you know, there are variation in the harvesting periods, but then still this monsoon is awaited desperately by the farmers. That is why we say that the cultural practices that we have, the traditions that we have, the harvesting seasons or the festivals that are associated with the agriculture, all these things, they unite the country into one single bond, right? This is what is meant by monsoon as a unifying bond, because we all know throughout the country, from north to south, from east to west, everyone waits for the monsoons desperately. Fine. So tomorrow, if we get a class tomorrow, yes, tomorrow we have a class. So tomorrow we'll finish the chapter and we'll start with the flow charts, right?